Today I'm explaining testing of automotive paints. So this is me Khadija Shah from Chemistry Department and my university is University of Management and Technology. So let's start. Introduction. So the first slide is tell us about the introduction. Automotive paints enhance appearance and protect surface. Provide Korean, UV and chemical resistant testing ensures performance and durability. So this is ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ ऑटोमेटिक पेंट्स जो होते हैं वो इन्हेंस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस को और सरफेस के अपीयरेंस को। लाइक पेंट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डेकोरेटिव पर्पस, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अपीयरेंसेस को इन्हेंस करता है और सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड करता है कोरियन यूवी एंड केमिकल रेजिस्टेंस। सो हम क्यों जो है वो ऑटोमेटिव टेस्टिंग जो है so provide Korean UV and chemical resistant. So why do we test automotive paints? कार के जो paints होते हैं वो looks के लिए नहीं होते basically. They protect the metal body from rust, scratches, sunlight, rain and chemicals. Testing makes sure the paint will stick well to the car, stay shiny and colorful, not crack or peel off, protect the metal from rusting. So दैट्स वाई ऑटोमेटिव पेंट्स जो है हम कार्स पे जो है वो यूज़ करते हैं और इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कार की ऑटोमेटिव सरफेसेस को। So chemistry and theory tells us the multi-layer system, primer, base coat, clear coat, resins जो होते हैं provide करते हैं strength and durability, solvent provide pigments, additives for function, cross-linking and UV curing enhance properties. This is a kind of ये किस तरह से जो है वो केमिस्ट्री जो है हम ऑटोमेटिक पेंट की एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमर कोट होता है या बेस कोट होता है जो कि एक क्लियर लुक प्रोवाइड करता है। देन हम जो है उसमें उसकी फॉर्मुलेशन में जब रेजन ऐड करते हैं तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है, लाइक लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रेंथ, उसकी थिकनेस। उसके अलावा सॉल्वेंट, पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स जो है वो इस वजह से हम यूज़ करते हैं फॉर फंक्शन एंड फॉर गुड अपीयरेंस। क्रॉसलिंकिंग एंड यूवी क्यूरिंग इन्हांस करती है प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट इन्हांस द लुक्स एंड सरफेस ऑफ द ऑटोमेटिव पेंट्स। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रैक्टिकल के जो स्टेप्स हैं पार्ट 1 का है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सरफेस की कि सरफेस सबसे पहले हमारी क्लीन होनी चाहिए, नॉन ग्रीसी होनी चाहिए एडहेशन के लिए। उसके अलावा प्राइमर जब अप्लाई करेंगे तो फॉर कोरियन रेजिस्टेंट एडहेशन, यानी उसके ऊपर कोई भी कोरियन के पार्टिकल्स ना आ जाए और वो रेजिस्ट हो। कोरियन रेजिस्टेंस इसलिए हम प्राइमर कोट करते हैं और पेंट जब हम अप्लाई करें फाइनल कोट तो वो चिपक जाए, अच्छी एडहेशन आ जाए, ठीक है, एडहेशन फिनिशिंग अच्छी हो। तो प्राइमर होता है, उसके अलावा जो बेस कोट है उसमें मल्टी स्प्रे लेयर्स आती हैं, इंश्योर करता है इवन कलर को कि किस तरह से कलर जो है वो इन्हांस होगा और फाइनल लुक देगा। एंड जो क्लियर कोट दिया जाता है वो प्रोवाइड करता है ग्लॉस एंड प्रोटेक्शन। एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आ जाता है इंश्योर्स ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी, के हमारे जो पेंट की क्वालिटी है वो कैसी है उसको इंश्योर करता है। एंड देन दिस ऑल ओवर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और इसमें सब कुछ आ जाता है कि ऑटोमेटिक पेंट्स जो है वो एक फिनिशिंग लुक कैसे दे रहा है। सो टेस्टिंग मेथड्स में आ जाता है एडहेशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, ग्लॉस एंड DOI। सो एडहेशन टेस्ट इज़ अबाउट क्रॉस एज और पुल ऑफ मेथड्स, एक मेथड है। उसके अलावा जो हार्डनेस टेस्ट होता है उसमें हम देखते हैं पेंसिल और स्क्रैच टेस्ट, लाइक हार्डनेस चेक करने के लिए कि उसके ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं बन रहा पेंट के ऊपर पेंट करने के बाद। ग्लॉस एंड DOI, अगर हमने पेंट का ग्लॉस चेक करना हो, DOI चेक करना हो, DOI एक टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैब के अंदर जो है वो जो मिरर स्ट्रिप्स होती हैं मिरर की, उसके ऊपर हम अपना जो हमने फाइनल पेंट बनाया होता है उसको हम पेंट कर देते हैं एक सिंपल ब्रश के साथ। एंड देन उसको DOI के नीचे रख देते हैं। DOI जो होता है वो उसकी ड्राइनेस हमें बताता है और ड्राइनेस के साथ हमें बताता है कि लाइक ये 24 आवर्स का होता है, 10 आवर्स का होता है, 6 आवर्स का होता है, कि वो उस आवर्स के ऊपर जब स्केल आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इतने आवर्स में इसका ड्राइंग टाइम इतना है और इतनी ग्लॉस आएगी। उसमें अगर स्क्रैच भी आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि अभी इसकी लेयर जो है वो किस तरह से हमने अप्लाई करी। तो अप्लाई मेथड भी जो है वो क्लियर होना चाहिए और उसका टाइमिंग जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। ग्लॉस एंड DOI ये चीज़ हेल्प्स है। टेस्टिंग मेथड में हम देखते हैं केमिकल रेजिस्टेंट, जो कि एक्सपोज करती है केमिकल्स को UV एक्सपोजर को। UV एक्सपोजर सिमुलेट सनलाइट एजेंट। देन ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर। सो ऑपरेटर्स
And procedure, we all need in automotive brands like sample panels, test chambers, gloss meter, cutter, and tape. To prepare test panel, expose under test conditions, record and compare results with standards. It provides automatic prints and help to reach the final product. Types of automated paint test. Adhesion, salt spray, UV, scratch, hardness, impact, chip, gloss, and color thermocycle. These all are the types of paints and has different functions. Adhesion tests how well the paint sticks. Small cuts like a grid are made on the painted surface. Then a tape is pressed on and quickly pulled off. If the paint comes off easily, it means it doesn't stick well. So its test is failed at this moment. Another test is weathering test. Weathering test how well it handles sun and rain. Paint samples are kept under strong artificial sunlight and moisturizer, or they're placed outside for months. This checks if the paint fails, cracks, loose shines, and harsh weather, and etc. Then another test is Korean test, chip gloss test, scratch and impact test for strength. So scratch and impact test for strength. The painted surface is scratched with a sharp tool or hit with a small ball. This checks if the paint can resist small damages without chipping off. So these tests tells us the paint sticks strongly and stays on for years if the color remains bright and doesn't fade in the sun and the rain. Application of testing used in OEM plants, labs, quality assurance. OEM stands for Original Equipment Manufacturer, a company that design, develop, produce components, parts, finished product that are sold under the for the multi-purposes brands and processes and procedures and products. R&D labs quality assurance just used for certification and clearance studies. For example, salt spray test sample A 2 rust creep fails. Sample B, if we have a sample 0.5 minimum dirt rust creep, it means it passes because of unclean sample B is acceptable then the comparatively sample A. That's why salt spray test is more affiliated to the automotive paints. Basically, salt spray test is about accelerated current test used to evaluate resistance of materials, coatings, and surface treatments for corrosive environments. So it involves exposing samples to a fine mist of salt water, sodium chloride solution inside a closed chamber. So, for example, we take a closed chamber and add some sodium chloride solution and fine mist of salt water. This standardized test simulates the effects of long-term exposure to corrosive conditions, helping manufacturers assess the durability and longevity of their product. So the purpose to do this test is evaluate corrosion resistance and make sure the quality control. So that's why the sample B is acceptable. So the next slide is the adhesion test. Adhesion test is the 25 squares tested and then 25 squares tested 3 remove equals to 12% area according to ISO 2409 class 3 moderation adhesion. So the adhesion test I am explaining as well. So the adhesion test is how well the paint stays. Small cuts like grid, then a tape is pressed on and quickly pulled off. The paint comes off easily, it means it doesn't stick well. So adhesion test is basically a sticky test or how paint stick well with the surface. So this is all about the adhesion test. Discussion and results of this procedure and practical. Sample A fails rust resistance because it was not okay. Sample B passes all the tests, gloss, loss, but in A indicates UV issues. Future recommendation, it tells us about the use waterborne, low volatile organic compounds, nano coatings, apply AI for quality prediction, promote sustainable and smart coatings. Testing ensures why we do testing. Basically, we have performed some tests for testing to ensure coating reliability and performance, maintains vehicle quality, safety, and durability. So this is all about this practical. Thank you so much. Allah Hafiz.